अच्छा, आज हमने इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम में जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है वो ये है कि रोमन लीगल सिस्टम कैसे डेवलप हुआ था। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है लॉ ऑफ 12 टेबल्स। लॉ ऑफ 12 टेबल से ही रोमन लॉ हिस्ट्री का आगाज होता है, जिसको हम एग्जामिन करते हैं क्या इसकी हिस्ट्री है। Introduction. Roman law, the law of ancient Rome, from the time of the founding of the city in 753 BCE until the fall of Western Empire in the 5th century CE. It remained in use in the Eastern or Byzantine Empire until 1453. The growth and rise of Roman law holds more than decades, which is a considerable length of time. अच्छा, 5वीं सदी तक इसका जो रोमन लॉ, एशियन रोमन लॉ जो है वो डेवलप होता रहा। ठीक है। और इसमें आपको ईस्टर्न साइड भी मिलती है और बेजेंटाइन एम्पायर का भी झलक मिलती है। बेजेंटाइन का मतलब ये है कि जो वहाँ का कदीम रोमन लॉ था। ठीक है। और तकरीबन 10 साल से ज़्यादा अरसे के लिए ये डेवलप होता रहा। Under the advice and supervision of Emperor Justinian, corpus juris civilis have been arranged. As a legal system, Roman law has affected the development of law in most of the Western civilization as well as in parts of the East. अच्छा, ये उस टाइम के जो बादशाह थे जिनका नाम जस्टेनियन था, उन्होंने अपनी सुपरविजन में लॉ को अरेंज करवाया था, जो कि कॉर्पस जुरिस सिविलिस के नाम से कंसोलिडेट हुआ था, इकट्ठा हुआ था। ठीक है। तो जो कानूनी निज़ाम है, तो रोमन लॉ में का जो लॉ है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में भी उसकी डेवलपमेंट हुई और ईस्टर्न साइड पे भी डेवलपमेंट हुई है। रोमन लॉ एंड इट्स इन्फ्लुएंस। लॉ ऑफ 12 टेबल्स। The first law code in Roman history was the Law of the 12 Tables, the introduction to the development of Roman law, a highly elaborate system that has had immeasurable influence on the growth of Western law. It was summarized in the Corpus Juris Civilis in the time of Justinian. Roman law developed the distinction between public law, in which the state is concerned directly, for example, trade and taxation, and private law concerned with disputes between persons, for example, over contracts. जो पहला लॉ मिलता है आपको रोमन हिस्ट्री में, सबसे पहले लॉ ऑफ 12 टेबल्स को मुतारिफ करवाया गया था। ठीक है। जिसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस फिर वेस्टर्न लॉ में भी मिलता है। इसमें वो तमाम चीज़ों को समराइज करके इसमें डाला गया जो कि कॉर्पस जुरिस सिविलिस में प्रोवाइडेड थी। ठीक है। जो जस्टिनियन एम्पायर ने कंपाइल करवाया था, और इसमें फर्दर ये डेवलप करके बताया गया कि पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ में क्या डिफरेंस है। ठीक है। Influence of Germanic influence. The breakup of the Roman Empire under the pressure of the Germanic invasion brought the disruption of the Roman legal administration. Temporarily, the course of Germanic laws eclipsed Roman law in Western Europe. In the simpler Germanic courts, the main distinctive element was the use of composition for crimes, but most of the Germanic courts showed at least some Roman influence. अच्छा, जब जर्मन ने हमला किया था और रोमन एम्पायर बिखर गई थी, ठीक है, तो उस टाइम में आपको जर्मन लॉज का इन्फ्लुएंस भी मिलता है रोमन लॉ में। ठीक है। जिसमें क्राइम्स के हवाले से सुलह की बात की गई है, तो उसमें एटलीस्ट आपको लाजमी तौर पर जो जर्मन कोर्ट्स हैं या जो उस टाइम का जो रोमन लॉ था उसमें जर्मन इन्फ्लुएंस लाजमी मिलेगा। Roman law, together with the Bible, was the basis of canon law, the legal system of the Roman Catholic Church. Feudal law also showed the effect of Roman law, although in theory it was based not upon any concept of the state but on personal relation. तो उस टाइम का जो रिलीजियस लॉ है उसमें भी रोमन लॉ का इम्पैक्ट मिलता है। ठीक है। समझ आ रही है आप सबको? The revival of trade in the commercial revolution and in the Renaissance brought new development in maritime law. The study of Roman law itself was also revived. It became the basis of most continental law, as exemplified in the French Code Napoleon, the archetype of courts that govern the jurisdiction of civil law. फिर जैसी कमर्शियल ट्रेड स्टार्ट हो गई है तो उस टाइम का जो सी लॉ है उसमें भी रोमन लॉ दोबारा से फर्दर डेवलप हुआ। ठीक है। जो कि आगे सिविल लॉ की बुनियाद बना। समझ आ रही है आप सबको? Development of Roman legal system. King Tertullus Superbus. To King Tertullus Superbus, one of the memorable and significant eras of Roman history came to an end in 510 BC. And after that, a small city-state has been established by the Roman Republic. The central western Mediterranean was defeated.
Professional army got organized through this era and afterwards also improved the power. अच्छा, जब ये बादशाह टर्क्यूनस सुपरबस का दौर आया तो सबसे मेमोरेबल एरा कंसिडर किया जाता है रोमन हिस्ट्री में, ठीक है। इसमें जो सिटी थी वो स्टेट में छोटे से शहर में उन्होंने उसको स्टैब्लिश किया और जो प्रोफेशनल आर्मी है उसको ऑर्गेनाइज किया गया और पावर को मजीद उन्होंने इम्प्रूव किया। डिवीजन ऑफ पीरियड, द 12 tables, early law and jurisprudential of Roman legal system. In the earlier times, many laws have been passed. तो इस दौर को फर्दर आगे डिवाइड किया गया 12 टेबल्स में और आगे उस टाइम का जो थ्योरीज जो डेवलप हुई हैं, जो नजरियात डेवलप हुए हैं रोमन लीगल सिस्टम में। अब ये कुछ उन्होंने लॉज कुछ मेंशन यहाँ पर किए हुए हैं। Lex Hortensia says that the verdicts of plebeian assemblies is binding upon all the people. लेक्स हॉर्टेंशिया के मुताबिक जो प्लेबियन उस टाइम के ना दो ग्रुप्स हुआ करते थे, एक जो अमीर तबके से बिलोंग करता है और जो गरीब तबका है। तो उसमें उन्होंने बताया कि प्लेबियन असेंबलीज के जो फैसले हैं उनके लोगों पर बाइंडिंग होंगे। लेजिस्लेशनिया सेक्शिया इंक्लूड्स सम रिस्ट्रिक्शन प्लेस्ड ऑन द पब्लिक लैंड्स। लेक्स कैनुलिया गिव परमिशन रिगार्डिंग द मैरिज बिटवीन प्लेबियंस एंड पेट्रिशियन। तो ये तीन जो लॉज की एग्जांपल ये उस दौर के अर्ली लीगल सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है। आप बेशक दो ही इसमें से मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद प्री क्लासिकल पीरियड के बारे में बताया गया है। इन दिस पीरियड द डेवलपमेंट ऑफ मोर फ्लेक्सिबल लॉज इज सीन टू मैच द नीड्स ऑफ द टाइम। अ न्यू ज्यूरिडिकल क्लास इज क्रिएटेड, द जस horarium, which can be defined as the law introduced by the magistrate who had the right to promulgate edicts in order to support, supplement or correct the existing laws। तो उसमें ये बताया गया है कि इस दौर में काफ़ी लॉज में डेवलपमेंट हुई है, फ्लेक्सिबिलिटी पाई गई है और उस टाइम ऐसा लॉ इंट्रोड्यूस किया गया मैजिस्ट्रेट की तरफ से कि वो अपने फैसलों को प्रोमलगेट कर सकता है ताकि एग्जिस्टिंग लॉज को मजीद बेहतर बनाया जा सके। क्लासिकल रोमन लॉ, the first 50 years of the current era are the period during which Roman law and Roman legal science reach its greatest degree of sophistication. The law of this period is often referred to as the classical period of Roman law. The literary and practical achievement of the jurists of this period gave Roman law its unique shape. फिर further refined हुआ है क्लासिकल रोमन लॉ में। ये दौर जो है ये है कि 250 ईयर्स का ये एरा है जिसमें फर्दर रोमन लॉ डेवलप हुआ है और जो जूरिस्ट जो एक्सपर्ट्स इन लॉ है उन्होंने इसको एक यूनिक एक मॉडल स्ट्रक्चर में डाला रोमन लॉ को। The new concept and legal institutions developed by pre-classical and classical jurists are too numerous to mention here. Only a few examples are given here. Roman jurists clearly separated the legal right to use a thing ownership from the factual ability to use and manipulate the thing possession. They also established the distinction between contract and tort as sources of legal obligation. The standard types of contract: sale, contract for work hire, contract for services, regulated in most continental courts, and the characteristic of each of these contracts were developed by Roman jurisprudence. बस इतना ही मेंशन कर दी, एग्जांपल है उसके टाइम की, ठीक है, कि उन्होंने ओनरशिप और पोजेशन में फ़र्क बताया, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बताया, ठीक है। उसके बाद जो रोमन रिपब्लिक है वो 3 ब्रांचेस में डिवाइड हुई, असेंबली, सेनेट, कॉन्सल्स। उसके बाद पोस्ट क्लासिकल लॉ का टाइम स्टार्ट हो गया। बाय द मिडल ऑफ द 3rd century द कंडीशन फॉर द फ्लोरिशिंग ऑफ अ रिफाइंड लीगल कल्चर हैड बिकम लेस फेवरेबल। द जनरल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन डिटोरेटेड as the emperors assumed more direct control of all aspects of political life. अच्छा, अब इसमें जवाल देखने को आया इस दौर में, ठीक है, 3री सदी के दरमियान में, कि जब पॉलिटिकल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस की वजह से जो सिस्टम था वो काफ़ी डिट्रॉइट हो गया था, कि जब डायरेक्टली कंट्रोल दे दिया कि एम्पायर को तो पॉलिटिकल लाइफ काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुई। द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ प्रिंसिपेट which had retained some features of the republican constitution began to transform itself into the absolute monarch of the dominant। और रूलर्स ने बिल्कुल ही जैसे मोनार्की सिस्टम होता है ना, बादशाहत का कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो गया। The existence of a legal science and of jurists who regarded law as a science, not as an instrument to achieve the political goals set by the absolute monarch, did not fit well
into the new order of things. The literary production all but ended. Few jurists after the mid-3rd century are known by name, while legal science and legal education persisted to some extent in the eastern part of the empire. Most of the subtleties of classical law came to be disregarded and finally forgotten in the West. Classical law was replaced by so-called worker law. तो इसमें इतना वो जो एक डेवलपमेंट हो रही थी वो एकदम से रुक गई. लॉज को काफी ज्यादा यहाँ पर डिट्रॉयरेट कर दिया गया, मतलब कि तबाहकुन हालत यहाँ पर पैदा हो गई थी इस दौर में. Conclusion. Perhaps one of the greatest benefits of Roman law and its legal system was that as the empire grew and population grew more diverse, the law and its protection of citizens acted as a binding force on communities and fostered an expectation that a citizen's right would be upheld and a system was in place whereby wrongs could be redressed. In addition, Romans have handed down to us not only many legal terms still used today in the field of law and legal science, but also their passion and expertise for precise and exact legal terminology in order to avoid ambiguity and even misrepresentation of the law. Once again, an approach that all modern legal documents attempt to emulate. अच्छा, अब इसमें ये है कि रोमन लीगल सिस्टम से मतलब कि एक तो फायदा ये हुआ कि जो हमारी उस टाइम की जो एम्पायर थी वो उसमें डाइवर्सिटी आई, उसमें मुख्तलिफ किस्म के लॉज डेवलप हुए हैं, सिटीजन्स को प्रोटेक्शन फराहम की गई. और अभी भी ऐसा होता है कि रोमन की कई टर्मिनोलॉजीज हैं जो वो अभी भी लॉ में इस्तेमाल होती हैं. ठीक है, हाँ जी. 12 टेबल्स करना है आज, ये क्वेश्चन काफी है. हेलो जी, नेक्स्ट करवा दो, ये काफी है. हाँ जी हमजा. चलें या इतना आज काफ़ी है, फिर 12 टेबल्स कल कर लेंगे. ठीक है, आप इसको रिवाइज कर लें. मैंने दोबारा से आपको मेल भेज दी थी, कल कर लेंगे इसको. ठीक है.